Class 10, chapter 3, question number 2, second and third part. Okay, first and third part. Let us talk about first part. From the pair of linear equation, first what we have to form the pair of linear equation in the following problems and find their solutions if they exist by elimination method. So the method we have to use is elimination. If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator. In this case, first we have to assume let the number be, let the fraction be x over y. So according to the condition, 1 added to the numerator, x plus 1, and subtracted from the denominator, y minus 1, a fraction reduces to 1. So what it become? It become 1. Just imply I can write down x plus 1 equals y minus 1. So x minus y equals minus 2. This is our equation number 1. It becomes 1 by 2 if you only add 1 to the denominator. So this is case 2. We can this case 1, we can take this case 1 and case 2. What they are stating, वो क्या बन जाता है? Half बन जाता है. Only if we add 1 to the denominator. That means no change in the numerator. अगर हम denominator में 1 कर देते हैं, it will become 1 by 2. That means x 2x equals y plus 1. That means 2x minus y equals 1. Now they have stated to use elimination method. तो elimination में हम क्या करते हैं? Subtract करके value को eliminate कर देते हैं. So मुझे यहाँ दिख रहा है this is negative y and this is also negative y. What I'm doing? Equation 1 minus 2. So x minus 2x, it will give us minus x. Minus y and minus minus plus y. It will be eliminated. Minus 2 minus 1, that will be minus 3. So we got x as 3. Substituting this in equation 1. This is 3 minus y equals minus 2. So 3 plus 2 equals y. So we got y as 5. So the required fraction is 3 over 5. And even in these kind of questions, आप अपने आंसर्स को चेक भी कर सकते हो. x plus 1, that means 3 plus 1. Or y minus 1, that means 5 minus 1. It will become 4 over 4, which will reduce to 1. So absolutely right. So this was first part. Let's just talk about third part. The sum of the digit of a 2-digit number. पहली चीज, whenever we are talking about a 2-digit number, let the 2-digit number be ten x plus y. This is the main thing जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए. क्यों 10x plus y? जिसमें क्या है, x एक डिजिट है जो कि टेंस के प्लेस पे है और दूसरी डिजिट क्या है, y. मान लीजिए आपके पास 2 डिजिट हैं 1 और 2. उन दो से मिलके 2 नंबर बन सकते हैं, 12 और 21. अब यहाँ पर 12 कब है? जब 1 टेंस के प्लेस पे है और 2 वंस के प्लेस पे है. दैट मीन्स 10 इंटू 1 प्लस 2. अब ये 20 कब है? जब 2 टेंस के प्लेस पर है और 1 वंस के प्लेस पे है. सो यहाँ पर x क्या है? टेंस के प्लेस पे एंड y वंस के प्लेस पे है. आप उस चीज को लिखोगे वेयर x and y are 2 digits. ओके, अब लेते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग द सम ऑफ द डिजिट्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. डिजिट्स क्या है? x and y. सम ऑफ द डिजिट इज गिवन एज 9. ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर एंड 9 times this number is twice 9 times of this number 10x plus y is twice the number obtained by reversing. अगर मैं इसकी डिजिट्स को रिवर्स करूं तो x की जगह y और y की जगह x हो जाएगा. So it will be 90x plus 9y is 20y plus 2x. So I can write down 90x minus 2x is equals to 20y minus 9y. That means 88x is equals to 11y
So we can write down 8x is equals to y. Substituting this in equation 1. So x plus y की जगह हम write down 8x is equals to 9. So 9x equals 9 and x we got as 1. This implies y is 8 times of 1. So y we got as 8. So they have asked find the number. So the number is 10 times of x plus y, which is 10 plus 8, 18. So you'll write down at the end. So the required number is 18.